Derek Ashok tarpore, Derek Shatabdi. I am not the spokesperson. Please, give me 5 minutes. They are coming. No, they are coming. Okay. No, they are coming. They are coming. Sure. Just wait for 5 minutes. ओके पीछे भाई पीछे हो लो सब लोग पीछे हो जाओ हो जाओ पीछे हो जाओ what she did कीर्ति आजाद जी सर ममता सबसे पहले तो बताइए Were Mamta's action justified, sir? Sir, disrupting the ongoing investigation by ED, was it justified, sir? कितने देर तक यहाँ रखा गया और इस वक्त जो है आप लोगों की Sir, were Mamta's action justified? इतना विलंब करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो भी रहा हमने अपनी बताया कि जो हुआ उसका प्रतिरोध हम लोगों ने यहाँ पे किया और आगे हमारे नेत्री वह एक मार्च निकाले हुए हैं और हम लोग उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। हम लोग को ज्वाइन भी करना था लेकिन नहीं कर पाए। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि यह अनप्रेसिडेंटेड सर, अभी और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को रोकना मुख्यमंत्री की तरफ से इलीगल है। अब क्या कहते हैं, अब आप जानते हैं झूठ बोलने में तो बीजेपी माहिर है। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात हो, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जाने की बात हो, या स्मार्ट सिटी बनने हो या काला धन आना हो, तो झूठ बोलने में तो माहिर हैं, उस्ताद हैं। तो रविशंकर प्रसाद भी हैं, जैसा गुरु वैसा चेला। Sir, disturbing and ongoing. आप अभी और प्रोटेस्ट करेंगे क्या? No, then he came before. कहाँ गया वो? News 24 तो पहले से ही थे। बोलिए जरा। Ravi Prasad has said that this is unprecedented. A chief minister of a state obstructing the process of law, going in and picking up documents. Ravishankar Prasad has gone down in history as the most failed law minister of the country. He was appointed law minister and removed, I think, in record time. So I don't think he should come and give us a lesson on what is legal and what is constitutional. Number one. Next question, please. आप लोगों को आज जो ड्रैग करके लेकर आया गया Tampering of evidence. What is Tampering of this? evidence. Actually, you see, what you're talking about is, it is our property. It is our property. ED has come in to do a robbery into our house. ED is doing political espionage and ED is doing the political loot of our property. IPAC, everybody knows that IPAC is, we have a signed contract with them for our election strategy and our election work. All our election data, our surveys, our candidate lists, everything is in the IPAC offices. Now, 1 month before an election, in the middle of the SIR, on some old trumped up 6 or 7-year-old coal scams case, suddenly they've woken up and they have come to get all our information. So they have come to tamper with our information and take it and go and give it to the ED. And Mamata Banerjee has gone in. If somebody comes to your house to do a robbery, you are within your rights of self-defense to go and protect your own property. Mamata Banerjee is the leader of our party. That is our party's own confidential private information. We have every right to go in there and try and save it. Otherwise, ED will take everything and give it to the BJP. So it is the other way around. The shoe is on the other foot. महुआ आज जिस तरीके से आप लोगों को ड्रैग किया आपका हो गया क्वेश्चन बस मैडम Saying that this is not a political movement. They went for an investigation in a PMLA Oh case. really? Oh wonderful. Which is the predicate offence here? Tell us for 7 years which was it? I saw the ECR number. What was the predicate offence? And for 7 years they are claiming. I saw the only thing they have put out. We have not seen the original FIR. The ED can only come in if there is a predicate offence. And what is the predicate offence? Where is the original FIR? They have given some random ECR number and said this is a case from 7 years ago. So a case of 7 years ago, you have suddenly decided 1 month before the Bengal elections that you want to come in. Whose house do you want to come in? Somebody who is full-time employed as the election strategist of the West Bengal Trinamool Congress party and who is holding all the information regarding our election in their offices. You think anybody is going to believe them? Huh?
बंगाल के लिए ब्लैक डे है और क्योंकि संवैधानिक जिस दिन बीजेपी बंगाल में आया था और बीजेपी बंगाल में 60 सीट जीते थे, उस दिन ही बंगाल का ब्लैक डे हो गया। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उस दिन ही ब्लैक डे हो गया। जिस दिन बीजेपी बंगाल में जाके मोहन बंगाल को मोहन बेंगन बोलते हैं, जिस दिन रविंद्रनाथ ठाकुर और विवेकानंद का डिफरेंस नहीं जानते, उस दिन ही बंगाल में ब्लैक डे हो गया। तो बीजेपी बंगाल में जितना ब्लैक डे लाए हैं और ब्लैक डे देखने को बाकी नहीं है हम लोग का। अभी सबसे बड़ा ब्लैक डे उन लोग देखेगा जब मई महीना में, जब उन लोग 10 के इनकम नीचे आ जाएंगे। आज सांसदों को जिस तरीके से ड्रैग किया गया, next course of action for you guys from a party level? Okay, as you've seen that yesterday we had a full in across every block in Bengal. We had a protest at the grassroots level. Today we have done our protest here, and Mamata Banerjee, as we speak, is leading a protest from 8B bus stand to the Hazra stand. Thank you so much. सांसदों को जिस तरीके से ड्रैग किया गया, आप इस ये अच्छा आप बताइए, ये नया क्या है? हम लोग जब मनरेगा के लिए गए थे मंत्रालय में, पंचायत में, तब भी ड्रैग किया गया था। ईच टाइम भी प्रोटेक्ट को तो ड्रैग ही कर जाते। So it's nothing new. This is the BJP's way of dealing with opponents. Nothing surprising. That was taken during an ongoing ED investigation, ma'am. और